आप यूज करो, बट ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। ऑप्शन है, यूज कर लीजिए, बट कंफर्ट इज द फर्स्ट थिंग। तो ये आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मत यूज कर लीजिए, बट ट्राई कर सकते हो बिकॉज इट इज अ गुड ऑप्शन। ओके, सो menstrual cup is there comes in 3 sizes, okay, small, medium and large. वहां पे ना, विद द menstrual cup when you're buying it, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं हाउ बेसिकली आप जस्ट अंदर ऐसे दबा दो। सपोज दिस इज द कप, ऐसे आप अंदर दबा के अंदर डाल दो। It's very easy. It is soft. It should go inside आराम से. It should not cause any tears or any. It should not hurt. It will go inside. Especially best time to try anything like this ना, जब आप एक कप को insert करना है is in your period, because तभी वो anyways खून से होता है. It is थोड़ा सा wet, so it's easily inserted inside. तो आपको टैम्पून्स भी या menstrual cups भी जब भी कुछ भी आपको ट्राई करना है ना, तो आप ट्राई फर्स्ट डे या सेकंड डे, आप जब आप थोड़ा सा स्पॉटिंग चालू होता है ना, तभी आप ट्राई करेंगे तो इट विल बी easier. Second, how do we remove it? वो it depends on each cup, but even if you just press it and remove it, वो अपने आप वो suction vacuum जो होता है that breaks and it comes out easily. And every time you go to the washroom, आप वो you can remove it. वो जो अंदर जो menstrual blood collected हो गया है, वो you can put it in the toilet and flush the toilet. And that menstrual cup आप just wash करके, पानी में wash करके आप वापस अंदर डाल सकते हो. Once a day at least आप ये कप को स्टेरिलाइज कर दीजिए. दे कम विद स्टेरिलाइजेशन कंटेनर्स. उसमें गर्म पानी डाल के आप कप अंदर डाल सकते हो फॉर 2 to 3 minutes. और आप वो कप और वो स्टेरिलाइजर जो गर्म पानी में है, वो आप ओवन या माइक्रोवेव में डाल के आप 5 minutes में आप स्टेरिलाइज कर सकते हो. सो डू दिस एवरी डे जस्ट टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस. एंड ये कभी भी आप कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप हाथ धो के कर रहे हो, सो दैट यू आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन अंदर वजाइना में. You just have to go to the washroom and that's it. End of story. बहुत convenient हुआ था, especially to people who are traveling. And you can go swimming also with this. So it takes 6 months for any of this inserting thing, no? It takes 6 months के ये अजीब लग रहा है. But once you're used to it, it is fantastic. Take the flow. It's such a small cup, right? If it's a heavy flow, then So you have to just empty it more often. okay, And just like you realize. mhm. हाँ, and you realize, जैसे you know when your pad is full, no? It's not कि you have to go to the washroom and realize कि वो pad full हो गया है. ऐसे नहीं रहता ना. You realize कि अरे अभी leak होने वाला है. It comes. So same with the cup. Inside थोड़ा वो heaviness आ जाती है. Again it takes some time to get used to it, but वो heaviness आ जाती है. Then you realize कि बस अभी washroom जाके ये खत्म करना है. But first few times you have to go like every 2 hours, see कि कितना हो रहा है, empty कर लो वगैरह. That is the only disadvantage कि you don't realize how much you're bleeding unless you go to the washroom. Exactly, yeah. For someone who's bleeding heavily is a task, right? I mean, they may miss and it starts leaking or something. Is But it like that will that happen or? with pads also. Also, so first when you're trying these things out, no, you can keep a pad along with it. So आप वो डर नहीं है कि leak होगा तो क्या होगा. So wear a pad first few times and wear the menstrual cup. Then once you're used to the menstrual cup, then dispose of the pad. So Yeah. सिर्फ try करने Okay. से कुछ you don't realize, try करेंगे तो then you will say, oh wow, why I didn't try before. But some people are scared कि मैं अंदर insert करूंगी कैसे, it is so अजीब and weird. It's not, you get used to it. And this can be done with young girls also, just जिसको sex नहीं किया है, teenagers, all of them can do it. ऐसे नहीं है. Maybe while introducing also this can be done if somebody has got their first period. तो कर सकते हैं, that means. It depends on her Okay. age. Obviously Mhm. at 9, 10 years you don't want her to, she may not understand, but Okay.